a very special show on Wimbledon final match, which is going to start just in less than an hour, and the two topmost grass court players are going to play in the Wimbledon final. There is going to be Roger Federer, and who will try to win his ninth title on the grass against Novak Djokovic, who is right now the world's #1 tennis player. किसका पलड़ा भारी हो सकता है, हमारे साथ बताने के लिए दो एक्सपर्ट हैं, अंकिता भामरी फॉर्मर इंडिया प्लेयर और यूकी भामरी जो अभी भी भारत के लिए खेलते हैं, और टेनिस में इन दोनों से बढ़िया और मजबूत आवाज देश में नहीं हो सकती है। बहुत सारे आंकड़े इस समय आपको चारों तरफ से मिल रहे होंगे। एक तो फेडरर की उम्र 37 साल की है, अगले महीने ही वो 38 साल के हो जाएंगे। नोवाक जोकोविच ऑन द अदर हैंड इज 5 years younger to Roger Federer, so is age going to be a big factor over here, or is experience going to make Roger Federer champion once again at Wimbledon? We'll start with Yuki. Yuki, are you one of those Indians who say Roger Federer whatever the match is? You could say that, but I think when he plays against the top two, against Nadal and Djokovic, Roger Federer is always going to have a tough match. So he's playing a current world #1 against Djokovic, who's also a defending champion who won the championship in 2018. Okay. So this is as tough as it's going to get. I guess I was just looking at the stats, and only Stanislav Wawrinka is a player who has beaten Rafael Nadal and Djokovic in a Grand Slam. So it does not happen often to beat Nadal and Djokovic, but Federer has to do it if he wants to win the 9th title. Absolutely, and with that's why we saw Nadal complaining about the draw, because he knew he would have to play one of either Djokovic or Federer. And Federer had an incredible match against Nadal with the scoreline, with how aggressive he was. I think he's playing very freely. He's taking the ball on the rise, and he's definitely going to take the game to Novak. I would say not on many occasions when you can call Federer as an underdog, but I think going into this match, he's definitely not one of the favourites, but I think he has a great shot of getting his 21st Grand Slam title. Oh really? Ankita, would you agree with your brother that right now even the experts are calling Roger Federer as the favourite to win the title, because whatever the bets are, the odds are in England, Novak Djokovic is beating, at least in the bets, and he is considered more favourite than Roger Federer to win this title? Well, if there's one thing I've learned, it's sports is totally unpredictable. Just yesterday we were talking about Serena Williams, clearly being the favorite, and look at how she was demolished by Simona Halep. I mean, 6-2. She just got swept off the court. She herself said that she was a deer caught in the headlights. So you could say that how she lost Serena Williams was in front of Simona Halep. So being one of the Federer fans, I'm still not going to call him the favorite today, because it's totally unpredictable. We are talking about two great players who've played 46 times before. 47. So this is I think their 47th. This is going to be their 48th, and now that you have brought a stat in, I would like to throw a stat. Okay. 47 times Novak Djokovic and Roger Federer have played each other, and 25 times Djokovic has won. यानी 47 बार आमने सामने ये हुए हैं। पहली बार 2006 में इन दोनों का मुकाबला हुआ था, और आप सोच सकते हैं कि पिछले 14-13 साल से ये लोग लगातार खेल रहे हैं। 47 बार आमने सामने इनका मुकाबला हो चुका है। 25 बार जोकोविच जीत चुके हैं मुकाबले, यानी हेड टू हेड अगर हम देखें तो जोकोविच का पलड़ा भारी है। अगर हम ग्रास कोर्ट पे भी देखते हैं तो आई थिंक जोकोविच इज लीडिंग 2-1, and if you look at the finals, Djokovic is leading 2-0. So stats are there, but stats, as you said, that they don't matter. I think there's a very interesting quote that I heard, that they hide more than they reveal. So you should never go exactly by the stats, but they do give a very good picture of the match that's in progress. But Yuki, one thing, age. How big is a factor? And it's not 1 year, 2 years. It's 5 years younger Djokovic is to Federer. If anything, Roger Federer has showed that age does not matter. So many people have been saying, so many people have been calling for him to retire, for saying that he's past his peak. He came on, he won his 20th Grand Slam. He's another Grand Slam final. People have retired by the time they're 34, 35. He's going to turn 38 next month, and he's in the Wimbledon final again. So absolutely incredible. I don't think age is really going to matter here. More than that, I think it's experience of him having won it 8 times before.
and going for another 21st Grand Slam. I think he's going to be a lot more freer this time. I don't think there's any pressure on Federer to get those records because he's already so far ahead from everybody else. Ankita, again, if you talk about the stats and about the strengths and weaknesses, what do you think कि इस समय रॉजर फेडरर की स्ट्रेंथ क्या है जिस पे उन्होंने काम किया है? I mean, अगर आप 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतते हैं तो I mean you look fool as when you assess Roger Federer's skills and strengths and weaknesses, but that's a job. What do you think is his strength right now? I mean, that thing can make him the champion here again. Well, I mean, if you see, obviously, people are saying that Novak is the favorite here because he's won it. He's coming back again to win it another time. And if there's anybody who can really push Federer other than Nadal, it's always been Djokovic, and he has done so in the past. We've seen it many times, and he has the head-to-head record win also here at Wimbledon, beating him twice before. So I think what makes the difference here is how much can you push him? How much how much of this match is going to be Federer attacking and attacking and attacking till we see Novak crack, which doesn't really happen. All the greats have been saying that Novak is so good that he gets every ball back. He's like a spider who's going to get to everything. He's not going to crack. So looking at all of that, it's not about strengths or weaknesses. It's about how great you are on that particular day when you've come to win the finals. Yuki is just like two people who just practice daily. क्या अलग करते? They know their opponent's game inside out. So how are they going to prepare? And if someone has to win it, is the person who has to take the more risk? वो आंखें बंद करे हुए खेलेंगे ना तभी उनको पता होगा कि बॉल कहाँ जाने वाली है. इतनी बारी खेल चुके हैं. So it is, and when it comes to Grand Slam final, I think obviously nerves come into play, but also determination, because both are absolute great champions. And like Ankita said, Novak is a very, very good retriever. In fact, everyone says when you're playing Novak, it is like playing against a wall. The ball is going to come back again and again and again. But whereas it being on the grass courts, it plays faster. It plays to Federer's strength as well. He brings a lot of variation to his game. He's one of the very few people who still sometimes serve in volleys, which can disrupt Novak's rhythm. That's something I think Federer will try and look towards doing. And I think it's another classic example of how he went playing against Nadal, where he's taking the ball on the rise. He is being very aggressive with his backhand as well, which the opponents have been sort of pushing him to do, and that's one aspect where he's improved a lot. So I think if he's aggressive and he brings his variations, serves and volleys, that's one of the few ways where he can put Novak under pressure. अंकिता, प्रेशर की बात की युकी ने. फाइनल का प्रेशर, हम एक तरफ वर्ल्ड कप पर हम नहीं पहुंच पाए क्योंकि हम सेमीफाइनल का प्रेशर ही क्रिकेट में नहीं जीत पाए. अगर हम टेनिस की बात करें, रॉजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 10 में वो फाइनल में हारे हैं. सो 30 ग्रैंड स्लैम में वो फाइनल में पहुंच चुके हैं. प्रेशर क्या उनके लिए नया होगा या आज भी उनके लिए उतना ही प्रेशर होगा जो शायद हर बार होता है? देखिए, प्रेशर हैंडल करना तो दोनों प्लेयर्स को बखूबी आता होगा. आफ्टर सो मेनी ग्रैंड स्लैम फाइनल्स उन्हें पता है क्या एक्सपेक्ट करना है. एक दूसरे से वो इतनी बार खेल चुके हैं, जैसा कि युकी ने कहा कि उनकी एक दूसरे की गेम से वो बिल्कुल वाकिफ है. उन्हें पता है कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए. इनफैक्ट इन वन ऑफ द इंटरव्यूज आई इवन हर्ड जोकोविच सेइंग दैट the amount of pressure that Federer puts constantly by playing early and quickly and by winning the points so fast, especially on his serve. I think 95% of the times he's won on his serve. So the amount of pressure that he keeps putting, to be able to handle that is going to be one of the key factors that I will require. That is what Novak said in one of his interviews. So they clearly know what to expect. They know what's going to come their way. जी, और इसीलिए बहुत ही लोगों को इस बात की दिलचस्पी है कि दोनों खिलाड़ी जो एक दूसरे का खेल को इतनी बखूबी जानते हैं, आज कौन कुछ थोड़ा बहुत अलग करेगा दूसरे को सरप्राइज करने के लिए. अगर हम हेड टू हेड की बात करें, एक नजर आंकड़ों पे डाल लेते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं. पर हमने जैसा आपको बताया कि स्टैट्स जो है वो कहानी
थोड़ी बहुत छुपा लेते हैं। इस समय रैंकिंग फेडरर की 3 है, लेकिन उनकी सीडिंग 3 है, रैंकिंग जो है विंबलडन में वो 2 है। और थोड़ा बहुत जो है नडाल को इस बात से परेशानी थी कि फेडरर को यहाँ पर नंबर 2 क्यों रखा गया है। लेकिन अगर हम सीडिंग की रैंकिंग की बात करें तो नंबर 3 फेडरर है। जोकोविच इस समय दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, और दोनों का अगर हम हेड टू हेड बात करें 47 बार आमने सामने हुए हैं, 25 बार जोकोविच ने जीता है विंबलडन टाइटल। फेडरर ने 8 बार जीते हैं, जोकोविच ने 4 बार जीते हैं, और 4 में से 2 बार उन्होंने फेडरर को फाइनल में हराया है। विंबलडन का रिकॉर्ड फेडरर से शानदार आपको नहीं मिल सकता है। 101 मुकाबले जीते हैं, 12 उन्होंने हारे हैं। वहीं अगर हम जोकोविच की बात करें तो 71 मुकाबले उन्होंने जीते हैं, 10 हारे हैं। विंबलडन में 21 साल से फेडरर खेल रहे हैं, जोकोविच पिछले 15 साल से खेले हैं। ग्रास कोर्ट के अगर टाइटल्स की अगर हम बात करें तो फेडरर के नाम 19 रहे हैं, जोकोविच के 5 हैं। और करियर की बात करें तो सेंचुरी फेडरर लगा चुके हैं, जबकि जोकोविच को अभी काफी मशक्कत करनी है अगर 100 टाइटल्स अपने नाम करने हैं। तो ये आंकड़े थे जो बता रहे हैं कि ये दोनों खिलाड़ी कितने महान हैं, जोकोविच और फेडरर। जोकोविच चोट के बाद आए। अगर हम पिछले 4 मुकाबलों की बात करें फेडरर और जोकोविच की, क्योंकि फेडरर नहीं देखना चाहेंगे वो आंकड़े, बिकॉज पिछले 10 में से 8 मैचेस जोकोविच दोनों के बीच जीत चुके हैं। बिल्कुल, बट आई थिंक ज़्यादातर मैचेस हार्ड कोर्ट पे हुए हैं, एंड जैसा कि हमने देखा है सीन की 22-25 इतना क्लोज है। बट जोकोविच, आई थिंक ऑन दोस फ्यू इयर्स जोकोविच इज ऑल्सो एट हिज पीक, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। हर साल 3 ग्रैंड स्लैम जीत रहे थे, 2 बार ऐसा कर चुके हैं, करियर ग्रैंड स्लैम भी जीते हैं। एंड आई थिंक एक थोड़ा सा फेज था 2-3 साल का जहाँ फेडरर क्वार्टर सेमीज तक ही पहुंच रहे थे और ग्रैंड स्लैम फाइनल नहीं खेलते। बट आई थिंक उस ऑस्ट्रेलियन ओपन विन के बाद जो नडाल को फाइनल्स में हराया था, उसके बाद आई थिंक एक रीजुविनेटेड रॉजर फेडरर आए हैं। और ये 50-50 मैच है, जो खेलेगा, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। चलिए, आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पे छेड़ा है कि नडाल को जब उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में हराया तो रिजुविनेट होकर और फेडरर फिर से फाइनल में पहुंचने लगे। अंकिता, अभी तो हराया नडाल को रॉजर फेडरर ने, तो क्या नडाल को हराना एक बहुत बड़ा जैसे मोरल बूस्ट होगा फेडरर के लिए? Well, these are the 2 most important rivalries that we've seen, whether it's Federer, Nadal, whether it's Djokovic and Federer. तो definitely हम ये कहेंगे कि ये फेडरर जो हम देख रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि 2008 एपिक मैच जो हमने विंबलडन में देखा था, उसके बाद बहुत सारे लोग नडाल को फेवरेट कह रहे थे। बट जिस हिसाब से फेडरर ने अटैकिंग स्टाइल खेला, जो बैकहैंड्स उन्होंने ऑन द राइज लिए, एंड क्लियरली विंबलडन फाइनल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इन इटसेल्फ। व्हाट बेटर देन अ विंबलडन फाइनल? सो क्या एक्सपेक्ट किया जाए? एज लॉन्ग एज आई फील दैट ही इज रिकवर्ड वेल, ही इज रेडी टू टेक ऑन जोकोविच, इट्स गोना बी अ कंप्लीटली different match altogether, because we know that it's going to play on Federer's mind that he hasn't gotten past Djokovic and Nadal in the same Grand Slam. So it's got to be seen how well he's recovered, how ready he is to take on the challenge, because I think with Nadal he does have a certain edge. He knows a certain style that needs to be played, but with Djokovic that's not there. There is no opening, there is no setup where he knows that okay, this is where I can constantly go. So it's a very similar style of play, other than the fact that Federer is very very attacking. लेकिन अगर आप जोकोविच जैसे खिलाड़ी के साथ खेलते हैं युकी, तो जैसे आपने कहा जैसे वो स्पाइडर की तरह है, वो एक बॉल की तरह है, मतलब जो भी आप फेंके, एक जब हम लोग बहुत छोटे थे तो एक यूएस के खिलाड़ी थे माइकल चैंग, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, ही यूज्ड टू फाइट इट टिल द लास्ट ब्रेथ। तो इस तरीके से अगर हम देखें, जब आप ऐसे खिलाड़ी के साथ खेलते हैं तो क्या आपको कुछ अलग करना है? क्योंकि अगर आप वही करते रहे जो जोकोविच सोच रहे हैं तो फेडरर शायद मुश्किल में पड़ सकते हैं। बिल्कुल, आई थिंक इट फॉल्स इनटू जोकोविच's हैंड्स अगर फेडरर पीछे बेसलाइन से खेलते हैं। इसीलिए वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए फेडरर भी इतने सक्सेसफुल हैं ग्रास पे, क्यों करते हैं वो अपना स्लाइस यूज़ करते हैं बैकहैंड से, कई बार बॉल को ऑन द राइज लेते हैं, प्रेशर डालते हैं। इतने हमने उनका सेवर फॉर्म देखा है कि वो रिटर्न पे ही आके नेट पे आ जाते हैं, कई बार सर्वन वॉली करते हैं। और ऐसे खिलाड़ी जो थोड़े से काउंटर पंचर हैं, जो बहुत सारे बॉल अंदर रखते हैं, जो बहुत क्विक है, इनको इसी तरह के वेरिएशन ही उनके रिदम को डिस्टर्ब करता है। तो आई थिंक ये फेडरर बहुत आज
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ज़्यादा नेट पे आए, ज़्यादा बॉल्स ऑन द राइज लें और जितना हो सके जोकोविच पे प्रेशर डालें। जी बिल्कुल, जोकोविच पे प्रेशर डालें। तो हर कोई ये समझ रहा है कि फेडरर जो कि क्राउड फेवरेट होने वाले हैं, क्योंकि जोकोविच और क्राउड के बारे में भी हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि आजकल जो दर्शक आ रहे हैं देखने मैच टेनिस कोर्ट में, जोकोविच और उनकी ज़्यादा बन नहीं रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको फेडरर के आंकड़े दिखाते हैं, क्योंकि हम ये आंकड़े आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि फाइनल से पहले की क्लियर पिक्चर आपके सामने हो जाए। अगर हम सिर्फ विंबलडन 2019 की बात करें तो 37 साल के फेडरर हैं, 32 साल के जोकोविच हैं, और ये 37 का आंकड़ा अगले महीने ही 38 हो जाएगा फेडरर के केस में। और दोनों ही सुपर फिट खिलाड़ी हैं, चाहे उनके वेट हो, उनकी हाइट हो। और जो खास बात यह है कि 5 साल छोटे हैं और 5 साल बाद ही जोकोविच ने प्रोफेशनल टेनिस खेलना शुरू किया है। और ये जैसे कि हमने कुछ देर पहले बताया कि 31वां फाइनल है रॉजर फेडरर का। 20 बार वो ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, 10 बार वो ग्रैंड स्लैम्स में हारे हैं। वहीं जोकोविच का 25वां ये फाइनल मुकाबला है। तो ये मैच शुरू होने से पहले इतना तो तय है कि दो महान खिलाड़ी हैं। तीसरे महान खिलाड़ी राफेल नडाल हैं, जो फाइनल में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि फाइनल में तो 2 ही खिलाड़ी होते हैं और फेडरर ने वो कमाल कर दिया नडाल को हराकर। तो हम क्राउड की बात कर रहे थे, तो आखिर जोकोविच की क्राउड के साथ क्यों नहीं बन रही है यूपी? आई थिंक क्योंकि इतने 2 महान खिलाड़ी ऑलरेडी हैं जी। जब भी लोग देखते हैं तो आई थिंक फेडरर नडाल की इतने सारे डोमिनेंट, इतने टाइम से डोमिनेंट थे कि क्राउड उन्हीं के लिए चेयर करती है। आप फ्रांस या पेरिस जाएंगे तो नडाल फेवरेट होंगे यहाँ पे क्राउड की। आप विंबलडन छोड़े, ऑल ओवर द वर्ल्ड रॉजर फेडरर इज फेवरेट। ही इज लव्ड बाय एवरीवन। But there was an instance which happened against Batista in the semi-final. Crowd was actually cheering for Batista, though he was losing. And ultimately, after one of the sets, Djokovic had to say this to the crowd, so you could cheer. So, is it a negative energy that peps up Djokovic to perform more better? He has, and he's had a lot of crowd trouble very early in his career. We've seen even in New York when with Andy Murray. There are times when he retired in Australia due to heat. So I think there's always been a little bit of bad blood, although he's done very well now to change the image, change the perception of him. So this I think was a bit of a rare incident. But I'm sure जिस हिसाब से उन्हें third and fourth set Batista Gut के against खेला था, जितने impressive थे after losing the second set, I'm sure it egged him on and pushed him on, to prove the crowd wrong. Okay, it's just like अंकिता, यही है कि यहाँ बैटिंग करने कोई भी जाए, यहाँ पे चीयर करने के लिए सिर्फ सचिन के नारे लगते हैं। और एक और भी बहुत मजेदार किस्सा बताता हूँ कि जब फुटबॉल लीग चल रही थी और हम फुटबॉल देखने गए थे, तो फुटबॉल के ग्राउंड में भी सचिन चिल्ला रहे थे। मतलब इट वाज हाइट्स ऑफ। तो यही जब फेडरर खेलते हैं तो इट्स जस्ट फेडरर फॉर द क्राउड। तो हाउ डिफिकल्ट, मतलब विरोधी करे तो करे क्या? ये बात जोकोविच को भी अच्छे से पता है, क्योंकि he said that I'm expecting the crowd to not be the crowd favorite, and I am well prepared for that, which is this is what champions are made of. तो उनको मालूम है कि वो crowd favorite नहीं है, especially going into a Wimbledon final, and वो कह रहे हैं कि मैं इसके लिए already तैयार हूँ कि मुझे ये भी एक पॉइंट है जिसको ओवरकम करना है. सो ही इज रेडी फॉर द चैलेंज, ही इज रेडी फॉर द प्रेशर, एंड व्हिच इज व्हाई आई एम सेइंग ही इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू विनिंग another Wimbledon in his Wimbledon trophy in his kitty. True. Because you have played over so many different surfaces and in so many different countries, how does Wimbledon change over a period of 2 weeks? Initially the grass is greener, then it becomes drier because players keep playing on that. The tennis balls become much faster. So how does it change over from the first day till the final? I think it starts very slow because there's grass all over. Even when the prime example is looking at the baseline, once you start, because it's a light surface, nothing can be done about it, and all the running is usually on the baseline. So that's one of the very important things is it changes completely. When you look at the Wimbledon final today, there's probably going to be absolute no grass. It's going to be more sand and more muddy, which makes it also very difficult to move on the court because you have a little bit of grass in front of you and a little bit of a muddy surface behind you. So that's one of the trickiest things to do is to be aware if your movement gets very slippery. Also, I think it does to start play a little bit faster because
the balls have been used so much, because the court has been used so much. When starts, you have a lot more time to play, a lot more time to prepare, but the ball starts to come quicker. But I think the players would adjust to that because they've been playing match after match. I think, once the match starts, you adjust to the speed of the conditions. Ankita, there have been examples set by Djokovic, how he has changed his diet, and Virat Kohli is following Djokovic's diet, and the mantra that Djokovic uses, like he doesn't take I think gluten in his food. There is nothing gluten in his food. So the fitness, as Yuki said, how important is going to be a fitness of both the players, and they both look super fit right now. Well, I think they've just made age a mere number. If you look at this Wimbledon final and the Wimbledon Championship in totality, the amount of milestones that have been crossed are incredible. Federer looking to win his 21st, Grand Slam on his 21st appearance here, and Djokovic wanting to be number one and looking to be the one who surpass Federer's record. So they both are aware of the milestones, and it's only because they've been able to prolong their career for so long because of the fitness, because of constantly reinventing, doing the right things. And I think that is where nutrition and diet and fitness play a very, very important role. I think we as Indians are also now realizing it's not just what you do on the tennis court or in sports in totality. It's also what you put into your body, how you treat it, why physios are important, why fitness from day one of entering into a sport is so important. So it's a complete package together if you want to prolong your career, if you want to remain injury free for the longest period of time. So I think, which is why we have players all over the world, we have sportsmen all over the world following each other to see how they can prolong their career and be on top, be at their peaks, and do what is right, to be at their best. But Yuki, I mean, it's very good for the fans. That is the same name. So there's a fan following. There's a Federer. There's a Nadal. There's a Djokovic. But being a very purist of the game, I feel that the youngsters have not done enough to push these players to the limit. I mean, they can't. I mean, when Federer was young, they didn't even take time to replace Pete Sampras or any other Jim Courier on the circuit. But right now, they are playing. I don't think any youngster is challenging them. So, is it good for the game? I think this is one of a kind. We are not going to see this again, where the big three or the big four with Andy Murray, so-called big four, has been so dominant. And that's why, again, when you mention nutrition and you mention diet, it's because they've been able to play for so long. You would have never imagined a 37, 38-year-old men's player playing Grand Slam final. In fact, now Serena Williams was 37 as well. When Pete Sampras retired, he's 31 years old. I think Andre Agassi is one who changed the game, who played till 30, 34. But before that, we've had most of players, by the time they reach 30, 31, they've all retired. But now they're players peaking at 30, 31. The four semi-finalists were over 30 years. Even Batista Good is a 31, 30-year-old. Nadal is a 33-year-old. So they've changed the whole game. And I think the next generation of players have a lot to do and have a lot to catch up, because these guys are not going anywhere. And Djokovic is clearly the fittest player on tour. When I traveled, I had the luxury of traveling with you for French Open. I went with Yuki once when he was playing the French Open a couple of years ago, and I saw his 1 hour fitness schedule, and I saw the routine that I had the luxury of seeing what Novak Djokovic was doing. It was incredible, the amount that they could push their body, the amount of fitness that they were doing during a Grand Slam. It was incredible. It was an eye opener, and that's when I realized that the youngsters, the generation of today, they have a lot to achieve, they have a lot to do, and they really need to take a fitness as a component very, very seriously early on in their career. I think they have changed the entire scenario. Now not only sportsmen are looking to be fit, but people like us who no longer play are try to at least not do up to that level, but try to be as fit as possible we can. अंकिता, एक और बात है कि फेडरर के लिए आज क्या है, देखिए जिसके पास 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल, उस प्लेयर को किसी को साबित तो नहीं करना है. With what mindset would be Federer going to the center court today?
When you already have achieved history, when you already have so many Grand Slams in your kitty, with 8 Wimbledons already there, I think it's that personal satisfaction, it's that motivation of going in there every day in, day out, hitting the same balls. I think it somewhere down the line, it's actually an addiction to kind of win that trophy again and again. It has to be, otherwise what would motivate someone to go out there day in, day out, sweat it out, toil it out against Djokovic, against Nadal, you know, his two biggest rivals in today's men's era. So to do it day in, day out, I think it's an addiction. It's that personal motivation, that self satisfaction that one gets, and must have been incredible when we talk about Roger Federer. So basically we should, all the Federer fans should thank Rafael Nadal and Djokovic also, because of them Federer has to push himself so hard. Absolutely, and he mentioned that, and you know, we've had this talk of a lot of times as well. If there was no Nadal, maybe Federer would have won more French Opens, or if there was no Federer or Nadal, Djokovic would have won. So these are 3 great players in their own era, but there is no question that they've all pushed each other because they've had to stay with them. We've seen even Nadal change his game style. You never have thought Nadal winning, you know, 2 or 3 Wimbledons, being so successful in grass. He's a predominant clay court player. Djokovic has improved his hard court skills, and Federer has always been all time great when all court game. But I think after a very long time, Federer is going to go into a Grand Slam final completely relaxed because he has nothing to prove. He's already got the record of the most number of Grand Slams, and he can go out there, you know, knowing he's already achieved history. And if he wins another one, if he wins another Wimbledon, that's another Federer, and that's another history. If he doesn't, he's going to continue on for a few more years. जी, सो बेसिकली जो भी फेडरर के फैंस हैं वो राफेल नडाल और जोकोविच का भी शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं होते तो शायद फेडरर को अपने आप को इतना पुश नहीं करते, और जब परिस्थितियां बहुत आपके खिलाफ होती हैं तो आप उसमें ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वैसे भारतीयों का प्रदर्शन इस विंबलडन में बहुत ज़्यादा खास नहीं रहा है, उस पर हम हमारे कुछ आंकड़े हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि रोहन बोपन्ना और सबलेंका की अगर हम बात करें मिक्स डबल्स में, तो ये सेकंड राउंड में ही हमें हार मिल रही थी। पहले राउंड में लिएंडर पेस और समांथा स्टोसुर हारे थे, दूसरे राउंड में दिविज शरण और युआन की जोड़ी भी हार गई थी। ये मिक्स डबल्स की कहानी है। अक्सर पिछले 10, 12, 15 सालों में हम देख रहे थे कि मिक्स डबल्स और डबल्स में भारत की हालत अच्छी रहती है। अगर मेन सिंगल्स की बात करें तो प्रजनेश जो है मिलोस राउनिच से पहले ही दौर में हार गए थे, और साथ ही साथ अगर हम डबल्स की बात करें तो मेंस डबल्स में भारत की ताकत रही थी, लेकिन इस बार भी अगर हम देखें, चाहे वो दिविज शरण और टेबलिनर की जोड़ी हो, रोहन बोपन्ना और टूएस की जोड़ी हो, या फिर युआन और पूरव राजा की जोड़ी हो, लिएंडर पेस और बेनॉइट पायर की जोड़ी भी पहले राउंड में हार गई है। तो दिविज शरण की अगर हम बात करें तीसरे राउंड तक वो जरूर पहुंचे थे, लेकिन ये ऐसे नतीजे हैं जिनसे अगर आपको एक नया नाम आगे आना है तो फिर नतीजे थोड़े से बेहतर अगर होते तो युवाओं को ज़्यादा प्रेरणा मिलती। क्या हम सही ट्रैक पे हैं, या फिर इस समय भारत के टेनिस की बात ना करें तो अच्छा है, और आर वी ऑन द राइट ट्रैक? I think we are somewhere in the middle because we've seen numbers improved. आप पिछले 10-15 साल पहले देखेंगे तो खाली लिएंडर पेस और महेश भूपति का इनाम होगा, और आपने अभी इतने सारे नाम इतने हमने देखे कि इवेंट्स खेल रहे हैं, जीवन, पूरव राजा, दिविज शरण का इनफैक्ट आई थिंक सॉर्ट ऑफ अच्छा परफॉर्मेंस था टू रीच थर्ड राउंड। वो पिछले साल भी क्वार्टर्स खेलते तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, वो अच्छा कर रहे हैं। आई डिसअपॉइंटेड होंगे इस ग्रैंड स्लैम में, विंबलडन में मोस्टली रोहन बोपन्ना एंड द एवरग्रीन लिएंडर पेस। इतना एक्सपीरियंस है तो कोशिश उनकी यही रहती है जब जाते होंगे कि ग्रैंड स्लैम जीत सके। आई थिंक मेजॉरिटी अब और आ रहे हैं, स्पेशली डबल्स में ज़्यादा हम नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, तो जितने लोग खेलेंगे जितना और उतने और चांसेस बढ़ेंगे, तो फ्यूचर फिर भी ठीक है हमारे लिए। होपफुली एक आधा ग्रैंड स्लैम जीत पाए इन द नियर फ्यूचर। जी अंकिता, अब ये बात चल पड़ी है कि लिएंडर पेस मतलब हैज पास्ड हिज प्राइम, वैसे पेस के लिए भी कोई एज मायने नहीं है, लेकिन अब एक दूसरा ग्रैंड स्लैम आने में, चाहे वो मिक्स डबल्स हो या डबल्स हो, थोड़ा वक्त लगेगा। क्या आपको ये बात सही लगती है? हर स्पोर्ट में एक ट्रांजिशन पीरियड आता है, एंड एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से अगर हम देखा जाए तो आप देखिए इंडियन टेनिस में सडनली नंबर्स बढ़ गए हैं, हमारी पार्टिसिपेशन बढ़ गई है। जहां हम हमेशा लिएंडर, महेश, मे बी सानिया
का नाम सुनते थे, वहाँ रोहन, पूरव, दिविज, प्रजनेश, जीवन, इतने सारे नाम सुनने को मिल रहे हैं. सो दैट्स वन पॉजिटिव एस्पेक्ट जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे, हम थोड़े राउंड्स और क्लियर करते जाएंगे तो हमारी वो आशाएं भी बढ़ेंगी एंड हमें वो रास्ता भी नजर आएगा जहाँ पे दोबारा एक ग्रैंड स्लैम की उम्मीद की जा सके. ग्रैंड स्लैम तो आपका ये कहना है कि ये ट्रांजिशन फेज है. एब्सोल्युटली वी हैव. अब मेरे को ऐसे लगता है कि डबल्स को एक बहुत वायबल करियर ऑप्शन देखते हुए बहुत सारे प्लेयर्स अगर सिंगल्स में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं तो वो इस गेम के फॉर्मेट में मूव करके काफी अच्छे हो रहे हैं. हम अभी रिसेंटली 2 और प्लेयर्स साउथ ऑफ इंडिया से टॉप 100 क्रैक करने की उस पे थे. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड साइन. इट शोज दैट यस, टेनिस टेनिस इज समथिंग वेयर रीचिंग ग्रैंड स्लैम्स इज नॉट जस्ट अ dream, it can become a reality, and when we cross one step then we can take smaller steps to reach further on. So if more and more players are there in the draw, more and more players keep competing on a regular level, because the competition at that stage is very very high. So if you do that, you get used to that, and then we even see women, we see Ankita Raina, we saw Karman Kaur Thandi. So these are girls who are also doing well. Ankita has played all her she's played qualifiers of Wimbledon or French Open, and she's doing this probably for the first time. So आपका ये कहना है कि भले फाइनल सेमीफाइनल में आपको कोई भारतीय मिक्स डबल्स या डबल्स बट सून देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए नाम और पहले से ज्यादा भारतीय खिलाड़ी अब विंबलडन या बाकी सारे ग्रैंड स्लैम्स में खेल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि जितना वो उस लेवल पे compete करेंगे उतना उनका गेम निखरेगा, उतना उन्हें अनुभव मिलेगा और उतना अगले ग्रैंड स्लैम में उनका प्रदर्शन अच्छा हो सकता है. अब से कुछ ही देर या 20-25 मिनट के बाद सबकी नजरें होंगी विंबलडन के फाइनल मुकाबले में, जहां पर रॉजर फेडरर का मुकाबला होगा नोवाक जोकोविच से. नोवाक जोकोविच नंबर 1 खिलाड़ी हैं. अगर वो जीत गए तो नंबर 1 ही बने रहेंगे, पॉइंट्स उनके और थोड़े बढ़ जाएंगे. लेकिन अगर रॉजर फेडरर ये फाइनल मुकाबला जीत गए तो वो इस समय नंबर 3 रैंकिंग के खिलाड़ी हैं, नंबर 2 पर पहुंच जाएंगे. एंड आई थिंक यूकी नडाल इज नॉट गोइंग टू लाइक दैट, because he was a little fussy about the rankings, maybe because he knew that he would have to play one of these players in the semi-finals. So what do you think? What do rankings even matter to Nadal, Federer or Djokovic? I think number 1 matters to all three of them. I don't think whether they're number 2 या वो number 3 हो, I don't think that matters. And I think Grand Slam final जब खेल रहे हैं तो वो ranking तो बिल्कुल नहीं देख रहे होंगे, especially Roger Federer. इतने साल number 1 रह चुके हैं, most successful player रह चुके हैं. I think for number 1 for 6 या 7 साल रह चुके हैं, तो आई थिंक वो तो अपना 21st ग्रैंड स्लैम ही देख रहे होंगे. वो यही कोशिश कर रहे होंगे कि कितना अपना बढ़ा सकें, क्योंकि बोथ जोकोविच और नडाल ज्यादा पीछे नहीं है. एक आई थिंक 18 पे है और जोकोविच 15 पे है. तो वो तो जोकोविच भी पीछे लगे हुए हैं कि मैं पकड़ सकूं नडाल और फेडरर को. शायद एक बहुत ही शायद टेक्निकल सवाल हो जाएगा, क्या आप जोकोविच को इन तीनों में से ज्यादा कंप्लीट प्लेयर मानते हैं? क्योंकि फेडरर की अगर हम बात करें तो ग्रास कोर्ट के मास्टर रहे हैं, अगर हम नडाल की बात करते हैं तो अचानक क्ले कोर्ट फ्रेंच ओपन सामने आ जाता है, लेकिन जोकोविच की अगर हम बात करते हैं तो हर सरफेस पे उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है. आई थिंक लास्ट 6 or 7 years में अगर देखेंगे तो मैं बोलूँगा कि नोवाक जोकोविच ज़्यादा मोर कंप्लीट प्लेयर है, पर उससे पहले देखेंगे तो फेडरर भी आई थिंक एवरी ईयर 3 ग्रैंड स्लैम जीते रहते हैं. तो ऐसा नहीं है कि फेडरर भी अपने सारे, उनके ऑस्ट्रेलियन ओपन बहुत सारे हैं, यूएस ओपन आई थिंक 5 है, विंबलडन 9 है, तो रॉजर फेडरर को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते. सो आई थिंक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम श्योर रॉजर फेडरर, बट करंटली इन द लास्ट 5-6 years Novak Djokovic is the complete player. Okay, Ankita, just as Yuki said that the greatest of all time, and I think we should be lucky in our time to see such beautiful tennis on different surfaces, from not only from Federer but from Djokovic and from Nadal also. I don't think we could have expected this kind of rivalry, you know, such three great players coming and playing constantly, winning before. Nobody could have imagined that they would have such prolonged careers. So I think it's a treat, it's a delight for every tennis fan. It's a motivation for millions of people worldwide कि वो ऐसी rivalry देखने को मिलती है. They've won so many Grand Slam titles amongst them. I think चौथा नाम लेने में लोगों को सोचना पड़ता है. एक टाइम पे एंडी मर्रे थे, लेकिन
अब सोचा जाए तो इन तीनों का ही नाम बार बार आगे आता है, और ये अपने अपने सर्फेसेस पे, अपने अपने गेम स्टाइल्स पे इतने ज्यादा मास्टर्स हैं, लेजेंड्स जो इनको बुलाया जाता है, वो किसी रीजन से बुलाया जाता है। इतने सारे ग्रैंड स्लैम्स जीतने के बाद, और 20 के बाद ऐसा लग रहा था दैट वाज अनअटेनेबल, बट नाउ इफ यू लुक एट जोकोविच एंड नडाल कॉन्स्टेंटली विनिंग 1 or 2 ईयर आफ्टर ईयर, अब ऐसे लगता है कि कोई भी नंबर इज लेस इनफ। ये ऐसा मैटर करेगा फेडरर के दिमाग में कि नडाल 18 पे है, मैं 20 पे हूँ, मैं लीड जो अपनी बरकरार रखूंगा, कि ये सिर्फ जो स्टैट्स है, आंकड़े हैं, ये सिर्फ हम ही लोग देखते हैं। आई थिंक इतनी मेहनत करिए तो थोड़ा बहुत तो रहेगा दिमाग में कि मैं जीत सकूँ, मैं हाईएस्ट, कौन नहीं चाहेगा कि एट द एंड ऑफ द करियर सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसके हो। तो आई एम श्योर थोड़ा बहुत तो दिमाग में रहता है। आई डोंट थिंक ये परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगा, लेकिन दिमाग में तो रहेगा ही थोड़ा बहुत कि मैं 21 पहुंचूँ या 22 पहुंचूँ, और जोकोविच करेगा कि मैं अपना 16th ग्रैंड स्लैम जीत सकूँ। और इनफैक्ट इवन 5th विंबलडन टाइटल ज़्यादा लोग नहीं जीते हैं। पीट सैम्प्रस जो 7th पे हैं, और आई थिंक बॉर्न बॉग पिछले जो 5 जीते हैं, 5 लगातार, तो ज़्यादा ये भी एक हिस्ट्री है उनमें कि 5 विंबलडन टाइटल्स। आंकड़े हम देख रहे थे, 5 लगातार फ्रेंच और 5 लगातार विंबलडन। आई मीन बॉर्न खींची, इतने पीछे नहीं जाते। लेकिन अंकिता, जैसे यूकी एक बात यहाँ पे कह रहे थे कि शायद 2021 कितने ग्रैंड स्लैम हैं वो मैटर करता है। वैसे आज जब फाइनल चलेगा तो भारत की क्रिकेट टीम भी वहाँ आजकल फ्री घूम रही है, तो शायद हम बहुत सारे क्रिकेटर्स को शायद देख सकते हैं। सचिन फेडरर की अच्छी जोड़ी बनती है, दे आर फैन ऑफ ईच अदर, तो इसलिए भी फेडरर थोड़े भारतीय फैंस में, टेनिस प्रेमियों में ज़्यादा पॉपुलर हैं। We have seen Sachin in Federer's box in the past, so and I think because of so many Indian fans, काफी खुशी से वो उनको स्पॉट करते हैं टीवी पे, और मैंने भी काफी बार देख रखा है। तो आई थिंक फेडरर ऑल राउंड फेवरेट तो सबके रहे हैं, स्पेशली इंडिया में, एंड क्योंकि वो इतने साल से फेवरेट रहे हैं, तो इसीलिए क्राउड सपोर्ट उनके लिए ज्यादा होता है। बट ये एक 50-50 मैच होने वाला है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था। जैसे आपने कहा 50-50। लास्ट क्वेश्चन, यूकी, जोकोविच और फेडरर? आई थिंक जोकोविच और फेडरर। मैं इस बारी फेडरर की सपोर्टर हूँ, तो फेडरर की तरफ। तो जैसे कि कहा कि स्टूडियो में भी 50-50 चल रहा है, दोनों भाई बहनों के बीच में 50-50 चल रहा है, तो आप समझ सकते हो इस फाइनल को लेकर कितनी दिलचस्पी और कितना एक्साइटमेंट है। कोई समझ नहीं आ रहा है कि कौन इस बार चैंपियन बनेगा। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा। आइए मनोरंजन की एक नई दुनिया में। डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र फ्री डीटीएच सर्विस, जिसमें आपको मिलेंगे मनोरंजन से भरपूर 6 टीवी चैनल्स, 10 मूवी चैनल्स, 7 म्यूजिक चैनल्स, 2 चैनल्स स्पोर्ट्स के, 22 चैनल्स समाचार के, 2 लोकसभा और राज्यसभा के, 8 आध्यात्मिक चैनल्स और 38 क्षेत्रीय चैनल्स, यानी कुल मिलाकर आपको मिलेंगे 95 टीवी चैनल्स, और साथ ही साथ आपको मिलेंगे आकाशवाणी के 39 डिजिटल रेडियो चैनल्स भी। इतना ही नहीं, ये सभी चैनल्स आपको मिलेंगे बिल्कुल मुफ्त, यानी बिना किसी मासिक केबल शुल्क के। बस एक बार डीडी फ्री डिश